So, hello everybody, welcome back to the platform of Unacademy. And today is a very different session from my side where I want you to orient towards your presentation and your behavior towards the next upcoming NEET PG exam. So, I'm Dr. Kavita Srivastava, your NEET PG educator on Unacademy, and I'm teaching pediatrics to all of you on Unacademy. But today, I would just like to give you a brief orientation so that you guys don't waste any of your time and you start preparing for the next NEET PG exam, because the exam dates for NEET PG 2021 is nearing now, and those who are going to appear in the exam and still need to take a serious attempt for the next year's exam, and also to those who would be appearing straight away for the next year's exam, I would just like to give you a very brief orientation so that you don't waste any time and you start preparing for your exam in a good manner so that you achieve your rank in the first attempt itself. So for NEET PG 2022, that is for the upcoming NEET PG exam, the most important thing according to me that you guys must be looking forward to is to have a very good plan for your preparation. Okay, so I'll first begin with the orientation and then I will tell you all about the Unacademy subscription that we have to offer. So it is up to you to decide which subscription to take, what is going to be useful for all you guys. But definitely from my side, as an honest advice, I would go for an online subscription, which is best from Unacademy in the present time. So let's crack it is definitely the motto and the theme that we use it. And therefore, I believe that this gives you a lot of positive feeling from inside that yes, you can do it. So first thing is, before starting to prepare, always have a good mindset. So, good mindset, according to me, is once you decide that you have to prepare for your exam, you should be totally ready to face all the challenges, you should be ready to face all the complications, and you should stay motivated. So, please be motivated that yes, you have to do this, and it is just a phase of life. Okay? फर्स्ट थिंग इज कि इट इज अ फेज ऑफ लाइफ, प्लीज रिमेंबर इट. ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम देने के बाद, आपकी रैंक आने के बाद आपकी लाइफ फिनिश हो जाएगी या फिर आगे जाके आपके पास कोई और एग्जाम नहीं है. देयर इज hell lot of exams ahead also. This is just a phase of your life and you have to appear in it, and you have to know that yes, you can do it. If you have done it before, you have got good ranks in your previous exams, you have performed nicely, you have reached till here, you can definitely crack this one as well. Okay, it is a difficult exam, I understand. It's an all India based exam. There are many candidates, lakhs of students who are going to appear for it, and you have to bring your name ahead. You have to pull up your socks and gear up, but it is a phase of life. अगर आपने अभी तक इतना कुछ achieve किया है, this one also you can achieve. So before you start preparing for your exam, all of you should have a very good mindset. Stay motivated, stay connected with people who are actually preparing for the exam. Stay motivated because it is you who's going to save yourself from this mess. So इतना पढ़ना होता है, इतना stress होता है, duties करने होते हैं, everything goes into a chaotic management. But you have to help yourself to stay motivated each day, and each day is going to count. And with this drop of efforts that you make every day, at the end you're going to be able to achieve your targets. So those who are into the fresh MBBS passing out batch, those who are into internship batch right now, those who are going to appear for the first time, for those students it is very important to make your own study structure to stay motivated for your own goals. Okay, so after this, one thing that I would like to say is to have a good study plan in your mind. Please decide your own attempt that you want to take. It happens many a times that those who are giving their MBBS final year exam, you believe that no, I have to do internship for 1 year and I don't want to take a serious attempt for the NEET PG exam. So that is because maybe you feel that you have to do internship, it is very important for your curriculum, or maybe sometimes it is a kind of financial issue. Most of them believe doing JR-ship, most of them want to study, most of them feel that residency is only okay. So you have to make a good study plan. That means you have to cut short your whole time period into deliverable months. तो deliverable months कहने का मतलब मेरे तरफ से है कि आप कितने months अपने शेड्यूल में से देना चाहते हो towards your NEET PG exam preparation. ठीक है, अगर आपने 1 साल का internship का कोर्स डिसाइड किया है, that means you want to study also and you want to do your internship as well. So you should be very clear in your mind that how many months you have. Suppose आपने आज से decision लिया just after the NEET PG 2021 exam that I have to take a serious attempt next year, or those who are into
this course right now, that they know that they have to just take the next year's exam and you're freshers, so you should be able to count that how many months you have to prepare for your exam. It should be at least 6 months of preparation. That means 6 months of first reading. First reading as in आपको अपना course finish करना है. At least you should have a good enough amount of 6 months for that. And then you should have 2 to 3 months for revision and grand tests and everything that is going to strengthen up your basics, and you will be able to perform nicely so that you get a good rank. So basically revision and your foundation, picking up things like your grand tests and ranks and everything, that should be there for 2 to 3 months. So पहले 6 months में कोई stress नहीं लेना होता. It is one period where you're just trying to study as in आपको एक new course दिया गया है, you just have to sail towards the course and you have to finish the course in time. इसके अलावा कोई stress नहीं होता. So first 6 months में आपका target बस यही होना चाहिए कि अपने आप को हर tension से दूर रख के you have to finish the course. After you finish your first reading, once you jump into this method of doing revisions and attending the grand tests and everything, this period should be completely competitive. Competitive कहने का मतलब you should face yourself, you should know where you're standing after your preparation. You should be able to get a good rank in your grand tests. You should be able to understand your own mistakes, what went wrong in those 6 months that you could not understand the topics, you could not read them well, you could not revise them well. So a total duration of approximately 9 months, according to me, would be very, very good enough to help you prepare for your exam. So इस 9 months को हमेशा 6+3 में divide करना है. नाउ जो पहले के 6 मंथ्स होते हैं आपके, जिसमें आप अपना फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर रहे होते हो, उस टाइम पे यू कैन डेफिनेटली मैनेज इट विथ योर ड्यूटीज एंड एवरीथिंग दैट यू हैव ड्यूरिंग इंटर्नशिप. बट फ्रॉम माई साइड आई वुड recommend, as soon as you switch over to the second step of preparation, that is your revision phase and your competitiveness phase, you should always have a clear cut idea in your mind that you have to buy time for yourself. Okay, now how do you buy time for yourself? This is one term that I keep using in all my lectures also. Good evening to those who are joining. So this is just a very simple orientation class for those who are targeting the next year's exam. So buying time to yourself, बहुत ही important concept है. Now nobody can buy time, that everybody knows, but yes, NEET PG aspirants can buy time for themselves. So how do you buy time for your own self? So जो भी schedule आप अपना बनाते हो, ठीक है, उस schedule में से how to save time and effort. ठीक है, you have to save time and effort. तो जैसे किसी स्टूडेंट को कुछ चैप्टर्स पढ़ने में दे आर टेकिंग 10 days ऑफ टाइम, ठीक है, they are attending classes, going physically here and there, attending classes, making their own notes, revising their notes, reading their notes. So it takes a lot of time. So you have to also go into the habit of smart study. तो स्मार्ट स्टडी से क्या होता है, जो आपके पास कॉम्पिटिटर्स है, सपोज यू हैव गॉट 50 कॉम्पिटिटर्स in an exam and you have to beat them. So out of these 50, there might be some who are totally conventional people who prepare in a fixed format. Fixed format कहने का मतलब पहले वो अपनी books खोलेंगे, then they will mug it up, then they, after reading it, they'll make their own notes. After making their notes, they'll revise from the notes, they'll go to online media, practice MCQ little bit, then they go and take the grand test. So एक conventional तरीका होता है पढ़ने का, जैसे हमने पढ़ा था. Honestly मैंने भी ऐसी पढ़ाई की थी. But now you have got so many technologies and so many things to make you smart study. तो अगर आप स्मार्ट स्टडी का तरीका अपनाते हो, so what is going to happen in this smart study, you will be able to buy time for yourself. So if for example, if you join an academy, just for example I'm telling, not only for advertisement purpose. So if you join an academy, supposedly आपने ऑनलाइन कोर्स ले लिया, आपकी ड्यूटी मॉर्निंग 9 to 3 PM है, आपने अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करके यू लीव अर्ली, देन यू हैव द होल इवनिंग आवर्स टू स्टडी फॉर योरसेल्फ. सो वट एवर टाइम यू गिव फॉर योर स्टडी, सपोज आपने 5 to 6 hours you decide to study in a single day. So if you study for 5 to 6 hours, if you just switch over to the online media, ठीक है, आप अपने स्टडी रूम से यू लॉग इन फ्रॉम योर लैपटॉप एंड यू स्टार्ट रीडिंग. So the time that you had to go and travel to the coaching institute, that gets saved. Then the time that you have to come back from there, relax because you have traveled, and then to freshen up yourself and then again get oriented to sit down and start study, all of that time is saved. So out of the 50 competitors who are into conventional ways of studying, who travel, go to friends place, they study along with that, so all of that time is the time that you have bought for yourself. So that is known as buying time for yourself. Now if you're making your own notes, it might take hours as in 2 to 3 hours to study one topic and to make notes out of it. But
if you can simply listen to a lecture, a video class, which an educator is taking who has already gone through all these phases, like if you're learning pediatrics from me. So if I've already learned it from the standard textbooks, from the authentic sources, I'm delivering the same content to you. That means जो भी चीजें नेल्सन में लिखी है, जो भी पैथोफिजियोलॉजी है, जो etiology है, जो causes है, I'm sharing my own mnemonics, my tricks, and everything with you guys. So don't you think that I must have taken 4 to 5 hours to frame that into that presentation? Obviously, I must have taken that much time to put that much effort and make it into one compilation. So that compilation अगर आपको बिल्कुल as it is मिल रहा है, that means you are able to straight away study a topic from that particular part. So it is going to again save so much time. जो conventional student ने 4 to 5 hours spend करा to understand the topic, make his own notes, and then to memorize it, and then to apply it. If you just listen to a good standard video class, you also have the option to download the notes. That's such a beneficial thing. If you just take a printout of those notes, you use a highlighter and you mark everything that is important from that particular topic. जैसे मैंने cyanotic congenital heart disease पढ़ाया. So from that, if you get to know all the important causes, the pathophysiology, the structure of the heart, the four chamber view, and you just revise it again from that after reading it for the first time. Don't you think at what level you are, you have saved time, you have studied from a well standard notes set of notes. You don't need to open up your standard textbooks and keep mugging around. You also have a handy set of notes to revise. You had enough time to give 2 sets of reading to the same topic. तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कोई भी टॉपर बॉर्न टॉपर नहीं होता, एवरीबडी हैज टू वर्क हार्ड. सो एवरी पर्सन हु सिक्योर्स अ गुड रैंक बेसिकली is because of their hard work only. It is not that somebody is decided to be a topper. तो अगर आपने 2 साइकिल्स ऑफ रिविजन एक ही मोमेंट पे फिनिश कर लिया, एक बार आपने क्लास सुनी विच ऑल्सो हैड एन ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन, एंड देन सेकेंड टाइम you read it on your own, you highlighted the important points, and you're able to now revise it in maybe 15 minutes, maybe 20 minutes. So you think out of those 50 competitors who were around, if they had a conventional method of studying, didn't you save so much time from that? So that is something known as smart study. Apart from this, if you feel confident enough from the topic and whatever doubts you had, you can just post those doubts again on the online media. You can ask those doubts from the educator in the next class. So that topic is finished once and for all. You don't have to do anything. You can simply go and open your simple handmade notes, the printed set of notes. Just study whatever has been highlighted. जो चीज आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ी है उसी चीज से आपको सब कुछ रिवाइज करना है. ऐसा नहीं होता कि आपको हर बार अलग अलग बुक्स खोलने हैं. Once you open some MCQ book, another time you open the standard textbook. So that is not the way. You always have to study from one source from which you have studied in the initial days, जिससे आपके concepts बने थे. So let's crack it means basically you have to have a very good mindset. So please start to develop your mindset. जिन लोगों को seriously 2022 exam देना है, please start making your own targets. ठीक है? Please decide your internship, your duties, whether you have to work for it or not. If it is not important, you're into some kind of residency, maybe JRship or anything, which you think is not as important as scoring a good rank in NEET PG, which is possible for everybody. Don't think कि मेरा नहीं हो सकता, मेरा इतना लेवल नहीं है, मेरा इतना स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है? सो अगर आपको रैंक लेके आना है एंड यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट, देन प्लीज डिसाइड योर स्टडी पैटर्न. ओके, अगर आपने अपने मंथ्स डिसाइड कर लिए, अपना प्रिपरेशन फेज डिसाइड कर लिया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. एंड थ्रू आउट दिस स्टेप यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड. नोबडी विल कम एंड मोटिवेट यू. काफी बार होता है यूट्यूब खोल के कुछ डाल कर दो, you type like motivational lectures, motivational notes, and then you feel motivated. I understand, but maybe मेरे lecture के बाद भी थोड़ा motivated feel हो गए for 10-15 minutes. But then what happens? That motivation has to be constant. It comes from within you. अगर आप motivated हो तो ही आप खुद को motivated रख सकते हो. So you have to have a good mindset. Please start to stay motivated so that you can prepare constantly on the same speed, same pace, same pattern with the same dedication. Start to develop your study plan. Please decide the number of months that you can deliver towards the preparation. Split it into 2 parts, the first reading phase and the competitive phase, in which you'll start facing the competition of your own fellows. You will start appearing into grand tests, you will start seeing your ranks, you will start criticizing yourself, you will start revising whatever went wrong in the first reading, and then become a smart study pattern
स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो, उससे आपका खुद का टाइम बचेगा एंड यू विल स्टार्ट थ्रोइंग अवे ऑल योर कॉम्पिटिटर्स बिहाइंड बिकॉज यू आर बाइंग टाइम फॉर योरसेल्फ। जितने एफर्ट्स लगाओगे, जितना हार्डवर्क करोगे, उतनी अच्छी रैंक आती है। सो हार्डवर्क इज द ओनली सोल्यूशन, देयर इज नो गुरु मंत्रा कि हाँ आपने कुछ कर लिया और नीट पीजी क्रैक हो गया। जितनी मेहनत करोगे इट विल नेवर गो अ वेस्ट। ओके, so please start to do a smart study. So this is one very basic example I've given you for smart study. There are n number of tricks which I will deal from my subject personally in the next orientation class, where I'll teach you what you have to do about pediatrics for your NEET PG exam. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबका यही सवाल होता है, हाउ टू स्टडी। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज डोंट बी स्कैर्ड। ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ाई करके आप यहाँ तक आए हो, अगर बचपन से अभी तक की पढ़ाई एक साथ लेके देखोगे तो यू हैव स्टडीड quite a lot of chunk as compared to what you have to study for NEET PG. So NEET PG preparation की पढ़ाई इतनी भी difficult नहीं है जितनी सोच के हम उसको इतना डर जाते हैं। So it is there, definitely you have to study 19 subjects, but क्या आपको लगता है ये 19 subjects में से सब कुछ आपको ऐसे पढ़ना पड़ता है कि सब कुछ ही पढ़ना है? सारे टेक्स्ट बुक्स की फोटोज डालते हैं लोग एक साथ एक के पिलर्स बना के, दैट वी हैव टू स्टडी दिस मच, दैट इज नॉट द थिंग। इट इज एन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट कहने का मतलब है वेदर यू फिट फॉर दिस कोर्स और नॉट, बस ये टेस्ट किया जाता है। इसमें ये नहीं टेस्ट कर रहे होते कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है। सो इसमें सिर्फ ये देखा जाता है वेदर यू हैव द बेसिक्स क्लियर और नॉट। ठीक है, अगर आपको कोई डॉक्टर बना रहा है, दे हैव टू बी श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स और नॉट। सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है टू गेट होल्ड ऑफ हाई यील्डिंग टॉपिक्स। ठीक है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या होते हैं? हर सब्जेक्ट के कुछ गोल्डन टॉपिक्स होते हैं जो हर कैंडिडेट को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से पता होना चाहिए मतलब एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर इस बच्चे को ईसीजी पढ़ना आता है, इसका मतलब है ही कैन सेव पेशेंट्स। So everybody expects that out of medicine you should know basics like ECG, you should know the interpretation of common disorders, the common disease, emergency management. So that level that we have, that is pre-decided. ठीक है, अगर आप किसी भी साल का नीट पीजी एग्जाम खोल के उसके क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, यू विल सी दैट द लेवल इज समवट सिमिलर। वो लेवल क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये एंट्रेंस टेस्ट है, ये कोई गोल्ड मेडल का टेस्ट नहीं है कि हाँ आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, सिल्वर मेडलिस्ट बनना है, कितना कितना ज्यादा ऊपर मार्क्स लेके आने। इट इज अ कट ऑफ। कट ऑफ कहने का मतलब उस कट ऑफ पे they decide कि these candidates are eligible to move ahead and these candidates need more preparation so they can move ahead maybe next time. तो वो next time ना आए और हम इस time पे ही आगे बढ़ जाए, उस चीज को करने के लिए you need to have a good study plan. तो study plan में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? सिर्फ high yielding topics पे ध्यान देना होता है। You have to study 19 subjects. Please be clear about it. So 19 subjects में you have got all the long subjects and you have got your short subjects. ठीक है? So what you can do is, from my side, what I always recommend, I also did that. The one personal thing that I will share, जितने भी clinical subjects हैं आपके, जो आपके final year और third year के subjects हैं mainly, final year and your third year, ठीक है? Please start reading from these subjects. The point being कि अगर हम reverse direction में जाए, तो अगर आपने final year और third year के जो subjects पढ़े हैं, they are more fresh in your mind. If they are more fresh in your mind, you will be more comfortable reading them. It will give you a positive feeling that you are able to understand. It will cut short your boredom because they are kind of clinical subjects. It has got image-based questions. It has got concept-based questions. So you will feel interested in your own study. So that will help you to carry your plan of study for a longer duration of time. तो जो भी लोग अभी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द लॉन्गर सब्जेक्ट, स्टार्ट गोइंग फ्रॉम मेडिसिन, सर्जरी, OBGY एंड पीडियाट्रिक्स ऑल्सो। ठीक है, so these long subjects, the 4 golden subjects of your final year, along with the short clinical subjects. If you start this, your speed will definitely get picked up. ठीक है, definitely get picked up मतलब इन सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने से यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन. फर्स्ट थिंग बिकॉज यू आर श्योर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, यू हैव जस्ट स्टडीड एंड पास्ड इट. Second thing, they are interesting. Third thing, according to me, is it has got a lot of different types of questions. So if you get exposed to questions, और अगर मान लो आपने डायबिटीज पढ़ा और आपने कहीं क्वेश्चन देख लिया फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, anywhere, and you knew that this is the answer, and you see that yes, this is the answer. Once it is discussed, you feel so good from inside that you were able to guess the right answer. So ये अच्छी फीलिंग ही होती है जो आपको मोटिवेटेड रखती है. So for this, I would tell you to please go in a reverse direction. First, prepare for all the final year and third year subjects. Then you can start doing
studying your second and first year mixed bag subjects. Mixed bag कहने का मतलब ये सारे ही non clinical subjects है, so it is your choice which subject you want to do first. तो क्लिनिकल्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और जो बेसिक सब्जेक्ट्स है दे ऑल्सो होल्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन योर एग्जाम बिकॉज दे आर आस्क्ड विद इक्वल वेटेज. सो जितने भी आपके नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, योर अनाट, बायोकेम, फिजियो, योर सेकेंड ईयर पैथ, फार्मा, फोरेंसिक, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी, दी सेकेंड एंड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स यू कैन डू अ मिक्स पैक. जैसे आपने फार्मा और बायोकेम क्लब कर दिया, फिजियो फोरेंसिक क्लब कर दिया, सो इट डज नॉट गिव यू लॉट ऑफ बोर्डम अबाउट द सब्जेक्ट बिकॉज दे आर वेरी वेरी बल्की, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग, प्लस इट इज कम्प्लीटली थ्योरेटिकल. ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को आप क्लब करके पढ़ सकते हो. सो प्लीज गो इन अ रिवर्स डायरेक्शन. सो अकॉर्डिंग टू मी जो आपके 6 मंथ्स है प्रिपरेशन के, 6 months में please give adequate amount of time as per the institute और as per the course that you are studying. जो भी कोर्स आपने ज्वाइन किया, जैसे आपने अगर Unacademy ज्वाइन किया है, which I definitely expect you to join. So if you join Unacademy, maximum 6 months duration will take to finish it off completely. ठीक है, 6 months में you will be almost done with the theoretical and everything part which is important for your exam. So that gives you a lot of confidence कि आपका theory का part clear हो चुका है. All you have to do is to brush up your preparation in the next competitive phase जो आपके 3 months का आने वाला है. तो 6 months में हम generally finish करवा देते हैं. So it is advisable that if you want to continue with our preparation, please come and join the Unacademy subscription package so that you get to learn from most I mean fresh educators, the topmost educators, because we have been screened so nicely. I cannot tell you, every educator has been screened very nicely for their deliverables. So whatever we are teaching is already screened from all the textbooks, everything that we can accommodate, and then we are going to give you the lectures. So that saves so much of time for you. You will have the best materials that is possible because we are all fresh educators and all the standard textbooks have already been screened. You don't have to open up your textbooks. Also, you can totally rely on the notes. You can also use your textbooks for tables, figures, charts and everything. So mixture of all the things that we do is finally going to help you finish off your course in a duration of 6 months. So जिन लोगों को fresh start करना है, again I would recommend you please join an academy subscription so that you also get a complete blueprint कि हाँ इतने दिनों में मेरा ये subject complete हो जाएगा, इतने दिनों में मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. सो जैसे ये चीज दिमाग में क्लियर हो जाती है, सिर्फ हमारे दिमाग में क्या थॉट रहता है, स्ट्रेस फ्री पीरियड 6 मंथ्स के लिए हमें मेंटेन रखना है, हमें अपनी नॉर्मल ड्यूटीज करनी है, टाइम से वापस आना है, जितने आवर्स डेडिकेटेड है उतने आवर्स मुझे पढ़ाई करनी है, लेक्चर सुनना है, नोट्स इंस्टेंटली डाउनलोड करके उसे रिवाइज करना है. आई हैव टू डिस्कस द टॉपिक विथ माई सेल्फ. विथ माई सेल्फ मीन्स यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर, यू डोंट हैव टू कीप टॉकिंग एंड चैटिंग विथ फ्रेंड्स. हाँ तुमने कहाँ से पढ़ा, तुमने कहाँ से सुना, ये टॉपिक कहाँ अच्छा दिया है. जस्ट रिलाई ऑन वन सोर्स. तो इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस विथ योर सेल्फ यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. अगर आपको टॉपिक समझ आ गया, आपसे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर है, यू विल बी एबल टू आंसर इट. चाहे वो क्वेश्चन अनअकैडमी का हो, प्रेप लैडर का हो, किसी अलग इंस्टीट्यूट का हो, किसी भी एडुकेटर से बना हुआ हो, किसी एग्जामिनर ने बनाया हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, यू विल बी एबल टू आंसर इट कंप्लीटली. ओके, सो व्हाट टू ज्वाइन इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. कहाँ से क्या ज्वाइन करे, कैसे पढ़े. सो सिंस आई एम टेकिंग द ओरिएंटेशन, आई टोटली 100% शेयर एन अनबायस्ड फीलिंग. This is a very pandemic time. Nobody knows when the exam will happen, nobody knows when will the results get declared, and nobody knows when will the fresh batch begin. So as residents in the hospital, we also expect that yes, maybe the juniors would come this year. So nobody has any idea, honestly. Nobody can predict what will happen. So for those students who are into this phase of preparation in this year or upcoming year for 2022, it is highly questionable. Your status is questionable, that how much time will it take for the exam to happen, declare the results, and then to counseling and joining and everything. So I would definitely recommend please join the online course because it is a pandemic situation. So nobody knows what will happen. You cannot go and join any offline course according to me. Online course where you get complete preparation for all the 19 subjects. Complete 19 subjects are covered. Where you have options of grand tests, quiz, ऑनलाइन इंटरेक्शन. ठीक है, इससे क्या फायदा होगा,
जो आप पढ़ रहे हो उसका आउटपुट क्या है आपको वो समझ में आएगा। ग्रैंड टेस्ट देने से आपके रैंक्स आपको समझ आते हैं, आपकी गलतियां समझ आती है। क्विज देने से जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो समझ में आती है। ऑनलाइन इंटरेक्शन से जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। तो ऑल इन ऑल योर कंसेप्ट एंड योर टॉपिक्स विल बी completely cleared after you do all of these things. So from my side, definitely one subscription that we have, which is personally my favorite also, and I keep telling in all my classes, is the Iconic subscription. अगर आपने Unacademy join किया है, I definitely from my side I promise you that you will get a very clear cut finishing टाइमलाइन फॉर योर कोर्स। ठीक है, इसका मतलब है जितने टाइम में आपका कोर्स हो जाना चाहिए था इट विल गेट कंप्लीटेड। यू विल बी वेरी श्योर दैट यस यू हैव फिनिश्ड योर कोर्स एंड यू रेडी टू स्टार्ट रिवाइजिंग। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे अच्छा फायदा क्या है, अनअकैडमी और प्रेप लैडर इन दोनों का सब्सक्रिप्शन कंबाइंड है। ठीक है, कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या होता है, अब आपने बहुत स्टूडेंट्स को देखा होगा वो क्या करते हैं, अगर आपने सीनियर्स को भी ऑब्जर्व किया होगा, थ्योरी क्लास वो किसी और इंस्टीट्यूट की लेते हैं, ठीक है, और टेस्ट सीरीज किसी और इंस्टीट्यूट से परचेज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि काफी बार ये लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था, मैंने भी यही काम किया है। सो दीज आर ऑल कॉमन थिंग्स दैट वी गाइस डू, दैट इज व्हाई इट्स ऑलवेज गुड टू टेक योर इंस्पिरेशन एंड टू टेक शेयरिंग ऑफ इवेंट्स फ्रॉम योर सीनियर्स हु हैव गॉन थ्रू दिस फेज। मैंने भी यही किया था, मैंने थ्योरी कहीं और से ली थी, टेस्ट सीरीज 2 लिए थे इनफैक्ट कहीं और से। तो इसका क्या फायदा होता है, ऐसे लगता है थ्योरी जिसने हमें पढ़ाई है उनके टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन होगा जो उन्होंने पढ़ाया और मैं आंसर कर दूंगा, आई विल बी सो हैप्पी कि मेरा आंसर सही है और मेरी इतनी अच्छी रैंक आ गई। और जब मैं मेन एग्जाम देने जाऊंगा तो मेरी रैंक अच्छी नहीं आएगी क्योंकि वहां पे किसी और एडुकेटर ने क्वेश्चन बनाया है। दैट थिंक इज ऑल्सो राइट, ऐसा नहीं है। काफी बार ऐसे होता है कि जैसे अगर मेरे को क्वेश्चन बनाने दिया जाए, मैंने 2-3 मैराथन क्विज लिए विच आई हैड ओनली मेड, ठीक है, तो मेरी थिंकिंग प्रोसेस और जो कंसेप्ट था दैट वाज इन लाइन विद द कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे पेशेंट आया, उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स ये थी, उसकी इन्वेस्टिगेशंस में ये था, आपने ये चीज देखी, क्लासिकल हिंट होता है एंड टू डायग्नोज द डिजीज। तो मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। सो अगर मुझे किसी ने एग्जाम के एडुकेटेड एग्जामिनर लाइन में बैठा दिया कि आप बना दो क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के, तो मैं वैसे ही क्वेश्चंस बनाऊंगी क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस ही वैसा है। मैं बेयरली ऐसे क्वेश्चंस बनाऊंगी, व्हाट इज द वेट एट 3 months of age, what is the weight at 9 months of age, most likely I'll not do that. So every examiner, every educator has a certain thought process जो उनके favorites होते हैं, जो उनके हिसाब से important है to screen the children, they will put that in your exam. तो ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि जहां से हमने थ्योरी पढ़ी वही एडुकेटर क्वेश्चंस बनाएगा, so what will happen, I'll be able to answer it very confidently, but that will not fetch me good marks in the main exam because I already know what he's going to ask, and that is to some extent right also। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पेपर में वही चीज पूछ ली जो मैंने आपको थ्योरी क्लास में एज इट इज पढ़ाया और आपने मेरे ही नोट से पढ़ा और आपने सही आंसर कर दिया, और बाद में आपको थोड़े टाइम के बाद ये डर लगने लग गया कि मैम ने तो वही क्वेश्चंस थे एग्जाम में जो मैम ने पढ़ाए थे और मैंने वैसे ही आंसर किया, आंसर तो सही है, बट क्या ऐसे क्वेश्चन मेन एग्जाम में आएंगे? सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस, इवन इफ यू आर स्कोरिंग गुड रैंक, आपके मन में एक बहुत डर बैठ जाता है। आप फेसबुक सोशल मीडिया पे जा जाके अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चन टेस्ट सॉल्व करने लग जाते हो, एंड व्हेन एनी टाइम यू डोंट गेट अ गुड रैंक यू फील वेरी वेरी स्कैर्ड दैट आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, सो इसलिए काफी बच्चे ये कॉम्बिनेशन करते हैं कि वो टेस्ट सीरीज किसी एकदम ही अननोन अलग तरीके की जगह की ले लेते हैं so that they can assess themselves कि उनके concepts कितने clear है, and this is absolutely right। हमें बिल्कुल blindly एक टेस्ट सीरीज ऐसा लेना चाहिए जिसके बारे में आपने कभी अपने आप को एक्सपोज नहीं किया। ठीक है, सो इट शुड बी कंप्लीटली ब्लाइंडिंग प्रोसेस होती है पीएसएम में, आप सबने पढ़ा होगा, जब पता ही नहीं होता कि हाँ व्हाट इज द टेस्ट गोइंग टू हैपन। सो अगर आपने बिल्कुल ही अलग प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया और उसमें भी आपकी रैंक और मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं, दैट मीन्स व्हाट इज द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, एंड दिस इज ओनली वन थिंग, कंसेप्ट्स जो आपके दिमाग में अच्छे से फिट होने चाहिए ड्यूरिंग दो 6 months ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, कोई भी आपको NEET UG has been so long back. NEET UG almost I have forgotten. I'm already into my senior residency, so at max I can handle NEET PG and MD exams. So the concept is the same thing. You can use these tricks for your NEET UG preparation also. तो कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंसेप्ट जितना अच्छा होगा आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, सो दैट इज नॉट वेरी वेरी स्कैरी। इसलिए मैं कहती हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो प्लीज टेक आइकॉनिक, क्योंकि इसके अंदर अनअकैडमी के सारे बेनिफिट्स है। यू कैन यूज अनअकैडमी फॉर योर थ्योरी प्रिपरेशन, यू कैन अटेम्प्ट ऑल द ग्रैंड टेस्ट, और साथ में आप प्रेप लैडर के सारे टेस्ट सीरीज दे सकते हो।
ठीक है। सो जो भी लोग नए सब्सक्रिप्शंस लेने की सोच रहे हो, प्लीज टेक आइकॉनिक. आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, नॉट ओनली एडवाइज यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज टेक दिस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. इट्स टोटली गोइंग टू चेंज योर माइंडसेट ऑफ प्रिपरेशन. अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया, इट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू prepare a lot better as compared to your competitors. You will be through so many questions in one package that it is going to help you save a lot of time, a lot of effort running here and there with different test series, with different MCQs, with different channels on Telegram. Nothing is required. Stay connected to one thing, stick to one thing, one original grassroots, and then you're done with your preparation. So what to join according to me? You can join any institute. I'm not personally advertising only Unacademy, but जो भी आप join करते हो, please think over it that it should give you complete deliverable during 6 months duration, and you should also have ample test series and grand tests to attempt. So according to me, Iconic subscription. If you want to join an academy, please take Iconic subscription. And अगर आप पूछोगे भी online कौन सा join करना है, honestly I will tell to join an academy for your NEET PG. It is going to give you complete online preparation for 6 months in your own comfort zone. अपने study room से किसी भी device से login करके आप सुन सकते हो. It is going to save your so much time and effort, especially for those who are into residency like internship, JRship, उनके लिए सबसे ज़्यादा beneficial है. So from my side, please start joining Iconic subscription from an academy, and if you do that, it is going to give you a lot of benefit. ठीक है? So basically, there are many thoughts that come in your mind. What is in my mind? So internship के time पे काफी बच्चे तो यही सोचते हैं, क्यों पढ़ना है भाई, अभी तो शुरू अभी तो एग्जाम दे के पास हुए, लेट्स रिलैक्स फॉर सम टाइम. सो बेसिकली बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आते हैं, बट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होती है? सैलरी. सो जैसे आप इंटर्नशिप में जाते हो, आपकी सैलरी आनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, यू बिहेव एंड यू फील लाइक यूर अ डॉक्टर, यू स्टार्ट टू डायग्नोज पेशेंट्स, यू स्टार्ट टू ट्रीट देम. सो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है इनसाइड, from inside us, and you feel that your goal in life is almost attained. But that is not where you have to go. Do you just want to earn the salary that is given to you through internship, which is very basic? Do you just want to become a very basic MBBS doctor? No, your goal in life is very big. So अपने big goals हमेशा याद रखो. You have to become a very big doctor. Big doctor as in you have to definitely hold a name in some department, in some good kind of MD degree, or maybe ahead of that DM degrees. तो अपने बिग गोल्स हमेशा याद रखने होते हैं. डोंट सेटल फॉर लेस. ठीक है, इफ यू सेटल फॉर लेस, यू विल स्टे लाइक दैट ओनली. सो इंटर्नशिप में ये फीलिंग बहुत ज्यादा आती है, अरे कोई बात नहीं, अभी तो एग्जाम दिया है, अभी क्यों पढ़ना है, अभी ये क्यों करना है. सो ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए. सो दैट इज वाई आई से प्लीज स्टे मोटिवेटेड. अपने गोल्स हमेशा क्लियर रखो. आपका ड्रीम ब्रांच क्या है, आपको क्या करना है लाइफ में, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब आप ही डिसाइड करोगे. सो डोंट लेट दीज काइंड ऑफ थॉट्स कम इनसाइड यू. यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड एवरी डे विथ योर पीयर्स, विथ योर पेरेंट्स. मे बी they'll keep advising you कि ये डिपार्टमेंट उठाना चाहिए, ये पढ़ाई करनी चाहिए, from your teachers also, from everybody, seniors, and each day you will have different mindset, but it is only you who is going to stay dedicated कि मेरा goal ये है and I will do that for my life. So you have to stay dedicated. Please don't get carried away with different things like you are getting paid, you're behaving like a doctor, you can just sit in your clinic, you might not need an MD degree. There are so many things that come in your mind. So please have a fixed goal in your life which you need to do, so that you are able to understand that this is my target and I have to achieve it. Okay. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने लेक्चर लेने के बाद काफी लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इज इट सो इम्पोर्टेंट टू गेट सीरियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? शुड आई स्टार्ट स्टडिंग सो सीरियसली? व्हाई इज मैम टेलिंग सो मच? अभी तो एग्जाम हमारे खत्म हुए, वी आर सो फ्रेशर्स. बट नो, डेफिनेटली यू कैन डू इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. अगर पहले से ही सोच के बैठ जाओगे कि हमें 2-3 अटेम्प्ट में करना है, JRship के बाद करना है, अच्छे से बैठ के पढ़ेंगे तब हमारा रिजल्ट निकलेगा, दैट इज रॉन्ग. एज आई टोल्ड यू, इट इज एन एंट्रेंस टेस्ट. इसका टोटल गोल सिर्फ यही होता है to see whether you have passed the cutoff or not. कट ऑफ एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर जिन लोगों ने आंसर कर दिया, दे आर सेलेक्टेड टू मूव अहेड इन देयर करिकुलम, एंड दोज हु हैव नॉट बीन एबल टू पास द कट ऑफ, दे कैन नॉट मूव अहेड इन देयर करिकुलम. ठीक है, तो एंट्रेंस टेस्ट का मतलब ही ये होता है कि एक सिंपल कट ऑफ होती है, ना तो इससे आपकी कोई
मेडल डिसाइड हो रही है, ना तो इससे आपकी कोई फेलियर डिसाइड हो रही है, ठीक है। इट्स जस्ट अ बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट। इतने लाखों बच्चों में से किन बच्चों को आगे के लिए मोटिवेट करना है, सो दैट दे कैन परफॉर्म, एंड दोज हु नीड मोर स्टडिंग एंड दोज हु नीड मोर एक्सपीरियंस टू बिकम एन एमडी डॉक्टर, दे आर हेल्ड बिहाइंड। तो एंट्रेंस टेस्ट का मतलब होता है ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग है। इट इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल टेस्ट, क्योंकि इसमें ना तो आपके लिए कोई इतना डिफिकल्ट पेपर होता, ना तो आपके लिए कोई मेडल डिसाइड होता, और ना ही आपके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट वेयर यू कैन क्लियर योर एंट्रेंस एग्जाम। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ स्क्रीनिंग हो रही है। जो सब्जेक्ट्स अभी तक आपको पता होने चाहिए, क्या उसके बेसिक्स आपको पता है, जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए थे, क्या आप पेशेंट के आउटकम को समझ पा रहे हो, इट्स अ सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि इस टेस्ट का मतलब क्या है, अगर जब आप होते हो नीट पीजी एग्जाम के प्रिपरेशन में, ऐसा लगता है ये लाइफ का बस लास्ट एग्जाम है, अगर ये निकल गया तो सब कुछ हो गया, इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। बट जैसे ही आप अपनी एमडी डिग्री में जाते हो, आप एक एमडी होल्डर बनते हो, देन कम्स द रियल लाइफ सेंस कि मुझे आगे इतना सब कुछ करना पड़ेगा। यू कम आउट ऑफ योर एमडी एग्जाम्स, यू स्टार्ट टू become doctors, you start your practice and there are so many challenges to face। तब लगता है नीट पीजी एग्जाम तो कुछ भी नहीं था, वो तो बस बहाना था कि हम इस दुनिया में घुस सके, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। सो यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट दैट यू हैव। टाइम क्यों वेस्ट करना है हमें, जब हमें आगे एमडी ही बनना है, हमें आगे जाके प्रैक्टिस ही करना है, देन व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम। सो फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट करना आपका गोल होना चाहिए। डोंट थिंक कि हाँ हम अलग से 9-10 महीने निकालेंगे ऑफ लेके, उसमें पढ़ाई करेंगे और फिर एग्जाम देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट लेके चलोगे, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रैंक, ठीक है। So those people who are appearing into 2021 and who know honestly at their heart that this is not their final attempt, means you're very sure that you're just giving it for practice. Maybe you're not well prepared. I don't want to demotivate you before few days of the exam, but I know there must be many candidates who are very sure from inside that I'm just giving it for a kind of experience, ठीक है। सो जिन लोगों को सीरियसली 2022 टारगेट करना है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम आफ्टर 2021 एग्जाम, स्टार्ट टेकिंग सब्सक्रिप्शंस एंड स्टार्ट अटेंडिंग द क्लासेस ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है। जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतने जल्दी आपका 6+3 कॉम्बो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो फिनिश होगा। जितना जल्दी फिनिश होगा उतना जल्दी यू विल बी एबल टू बाय टाइम फॉर योरसेल्फ सो दैट यू कैन स्टार्ट हिटिंग ऑन द कंपटीशन पार्ट, ठीक है। अगर आपकी थ्योरी नहीं कंप्लीट होगी, आप कंपटीशन लाइन में कैसे उतरोगे, ठीक है। सो कंपटीशन फेज स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू फिनिश योर फर्स्ट रीडिंग पार्ट एंड दैट कैन बी फिनिश्ड ओनली इफ यू स्टार्ट वेल इन टाइम। So first attempt is the best attempt. Those who are into internship, please take it seriously. ड्यूटी से वापस आके सोना, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, बातें करना, नेटफ्लिक्स देखना, प्राइम देखना, हर तरीके की चीजें करना और बाद में सोचना कि ड्रॉप लेके पढ़ लूंगा, दैट्स द वर्स्ट कंसेप्ट। इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ये सिर्फ ये देख रहा है कि आपने अपने एमबीबीएस के 4 साल में क्या ऑब्जर्व किया, आपने इंटर्नशिप में अपने क्लिनिक्स में क्या देखा। द क्वेश्चंस आल्सो आस्क्ड इज सो बेसिक। जितने भी बेसिक क्वेश्चंस नीट पीजी में आते हैं, दे आर ऑल अराउंड व्हाट यू सी इन द हॉस्पिटल। अगर आप अपने ड्यूटी आवर्स में भी 9 to 4 अटेंटिव रहते हो, यू सी एवरीथिंग, you will do wonders in your exam. So from morning till the night you sleep, every day is a learning day. Don't waste your time in and around over here. You can buy time for yourself from your own schedule. आप hospitals में होते हो, clinics में होते हो, OPD में इतने patients आते हैं, just don't keep filling forms and taking out samples all the time. At least get to know what is the diagnosis, see through the treatment. You can do everything. Everything is possible. Police लगाते हो, you can see the caliber. जो syringes यूज करते हो, needles यूज करते हो, उसके गॉज कितनी है, कौन सा बोर्ड नीडल कहाँ यूज होता है, प्रोसीजर्स का तरीका क्या होता है। यू कैन जस्ट आस्क योर सीनियर ऑल्सो, दे आर सो मच ओवरलोडेड विद वर्क दैट आई डोंट फील लाइक टीचिंग यू, बट आई एम श्योर इफ यू आस्क एनीबडी इंस्टेंटली दे विल डेफिनेटली टेल यू। व्हेन आई एम डूइंग माय पेडियाट्रिक इमरजेंसीज, देयर आर सर्टेन इंटर्न्स हु आर सो enthusiastic to learn. They actually come to me and ask me that ma'am, this patient was in dehydration, how did you find, मतलब we get experienced कि हाँ severe dehydration, we start the treatment immediately because fluid response is the most important thing. But they actually come and ask me, then I actually discuss it with them in into their level that yes, you assess dehydration from oral mucosa, seeing sunken eyes, you can see the anterior fontanelle, you can do skin pinch test. So don't you think that period of whatever I'm telling you so productive for them, because उनके level पे dehydration assess कैसे करना is such a basic question which definitely comes in the exam. What is the treatment for severe dehydration, which is the fluid of choice? These are all questions that come in your exam as simple one liners.
So during your duty hours also, if you stay attentive, you stay oriented कि मेरे पास यही time है और इसी में मुझे करके दिखाना है, you will definitely find your own ways. Nobody is going to come and personally tell you कि yes, you have to study, sit down and study. You have to keep studying, keep learning every day. So वो time period 6+3 का आपको खुद के लिए खुद निकालना है. And please don't let go your first attempt. If you do it in the first attempt, you will definitely get the best rank in your life. That is one golden rule, and internship is the most common phase where we tend to do mistakes. So I hope that all of you understand, and those who are still into the thinking कि चलो एक साल drop करके पढ़ लेंगे, please get away of that thought. Start giving your best attempt in the first attempt itself. So ये पूरी कहानी मैंने क्यों सुनाई? So the reason and the thing behind it is to get your dream branch. जिस ब्रांच में फंस जाओगे पूरी जिंदगी वही काम करना है, ठीक है? So it is your life that you are deciding at this time, ठीक है? अपनी पूरी जिंदगी फिगर कर रहे हो, अगर अभी नेटफ्लिक्स देख रहे हो क्या पता फिर आगे जाके नेटफ्लिक्स देखने का मौका ही ना मिले, बिकॉज वट एवर ब्रांच यू विल गेट इज ऑन योर रैंक, ठीक है? तो अभी उतना ही नेटफ्लिक्स देखो, उतना ही प्राइम वीडियो देखो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो. मैं मना नहीं कर रही. यू कैन वॉच मूवीज, यू कैन गो आउट विथ आउटिंग्स फॉर योर फ्रेंड्स, यू कैन गो डिस्कस थिंग्स विथ योर फैमिली, यू कैन गो फॉर ट्रिप्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल. बट प्लीज डोंट get away from this 6+3 months plan. ठीक है? 6 months for your first reading and 3 months for your revision plus your competitiveness. ठीक है? So ये चीज अगर आप कर लोगे, you're definitely on the verge of getting a good rank. So you can become finer and finer as you move ahead. तो लाइफ डिसाइडिंग चीज है जो आप अभी कर रहे हो, एक एक सेकेंड आपकी लाइफ का आगे का इसी से डिसाइड होगा. कौन सा ब्रांच उठाओगे? यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट ब्रांच हैव डिफरेंट अप्रोचेस. यू हैव गॉट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ. जो डर्मेटोलॉजीज में होते हैं, रेडियोलॉजी में होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनका number of hours is totally different compared to those who are into clinicals like surgery, medicine, obs-gynae, pediatrics. There are so many things. You might have to do DM to get hold of a good status in the society. You might have to study again for a very huge competition. So जितना आप tolerate कर सकते हो, जैसी lifestyle आपको चाहिए, you will decide it. And these years that you have is your life deciding time. So don't take it so casually. Please start to structure your life. ये बिल्कुल बहुत ही crucial phase है. इस time पे आपका एक एक action आपके आगे का life decide करेगा. So take it seriously. It's not a joke. Don't stay back कि चलो कोई नहीं कर लेंगे, अगले साल देख लेंगे. ऐसा नहीं होता. Once you start it from today. Don't get demotivated. Don't feel that it is such a difficult thing. It's actually a very very simple thing. जो आपने 4 साल तक किया सिर्फ उसका एक screening test है. That is it. इसके अलावा कुछ नहीं है. इसके बाद जब निकल के आओगे एमडी ब्रांचेस में तब समझ में आएगा कि हाँ ये एग्जाम तो कुछ भी नहीं था. एंड इफ यू आस्क एनी ऑफ योर सीनियर्स दे विल टेल यू द सेम थिंग. अरे कुछ नहीं था, नीट पीजी एग्जाम, अभी आगे आके देखो क्या होता है. सो प्लीज स्टार्ट टू थिंक दैट वे. इट इज योर ओन डिसीजन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. वट एवर यू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज गोइंग टू डिसाइड योर कंप्लीट लाइफ आफ्टर दैट. ओके? Now, after everything that you have structured, one thing that you have to be sure about on your own shoes, in your own shoes, is your self-assessment. ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी नहीं करेगा आपके लिए. Only you have to do it for yourself. ठीक है? Only you have to do it, and that is because many of us feel scared of it and we don't do it. ठीक है? You have to become a self assessment person. That means you have to know your own mistakes. ठीक है? अपनी गलतियां खुद समझ में आनी चाहिए. कोई नहीं आके आपके बताएगा कि आपने एमसीक्यू में एक्सेप्ट छोड़ दिया था, आपने एमसीक्यू में ऑल एक्सेप्ट लिखा था, आपने एक्सेप्ट नहीं ठीक से पढ़ा, ट्रू की जगह आपने फॉल्स समझ लिया. सो दीज कॉमन मिस्टेक्स दैट वी डू इन एमसीक्यू दैट नोबडी इज गोइंग टू पिन पॉइंट, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने ग्रांड टेस्ट दिया है. ठीक है? तो सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ असेसमेंट्स. स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन दैट वे दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. ठीक है? अपने मिस्टेक्स, अपनी रैंक को खुद असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू assess your own self and you will learn from your own mistakes. So you have to also learn from whatever you do wrong during these tests and assessment. So self assessment किसी को skip नहीं करना चाहिए. Please don't feel, even if you get lakhs of rank in your first grand test or anything, don't get so disheartened. It is going to improve. It is a stepwise process that keeps on improving. So you have to keep doing it in a way that you see improvement in your own self. ठीक है? जैसे जैसे इम्प्रूव करोगे अपने आप को अप्रिशिएट भी करना है, अपने आप को क्लैप भी करना है, एंड जैसे जैसे गलतियां करोगे अपने आप को डांटना भी है. सो यू हैव टू टॉक इट आउट टू योरसेल्फ दैट व्हाट यू आर डूइंग थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन टाइम. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ असेसमेंट प्लीज
करना सीख लो. Start criticizing yourself, start praising yourself for whatever you do, right or wrong. So that is most important. So that is all from my side. Those who are preparing now for 2022, start preparing from today itself. As soon as the exams get over 2021, those who feel that they need to take a serious attempt, don't waste time, don't take too much long breaks, just start preparing from anything that you like studying out of the whole curriculum. Okay, so thank you all of you for listening so patiently. Please stay calm, don't panic, everybody will get a good rank definitely, and it is your hard work that is going to pay off. So from Unacademy, we have got Bugs Bounty as a feature. You can also report any inappropriate content in the video, and you can report the same to Unacademy. We also have a Telegram channel. You can download Telegram and follow us on Let's Crack NEET PG, where you get all the updates. And for the subscription part, if you are taking Plus or Iconic, which I would definitely expect many of you to take and start come to learn with us. So once you take it, you can avail extra 10% discount on the package amount if you put down this code, which is Kavita S10. So please put down this code so that above the discounts that Unacademy is giving, you also get 10% additional discount. So with this, what is going to happen? Obviously, you'll get financially benefited. And once you take the subscription, you'll get a complete blueprint of how to study and what is important to be studied इन योर प्रिपरेशन. तो पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है, कितने टॉपिक्स कब फिनिश करने, कैसे फिनिश करने. सो यू गेट टू स्टडी ऑल ऑफ दैट. So we have Plus and we have got Iconics. All of those who are interested to take, those who are the beginners here, please start taking a good amount of package. जिनके पास 1 साल का टाइम है, you can take it for 24 months. Those who have more than that time, who are into foundation based courses right now, you can take it for 48 or 36 months plan as well. So whenever you take any plan, please put down my code, that is Kavita S10. If you put down this code, you get instant discounts of 10% on your packages. So जो बच्चे MBBS में हैं, you can also start preparing so that you do smart study well in time. So you get Plus for 60,000 and Iconic for 75,000. You can take this and you can start preparing for your MBBS Prof exams also, plus the NEET PG exam as well. So this is the best package that we have for all the medicals. So you can take this subscription and again use my code for the same. So 12+2 offer is also there. Those who want to take it, you can take additional 2 month subscription for free. So I hope those who are aspiring for this year's exam must have taken the test, and all the educators, those who taught you last year, have put in so much of effort. So I hope all of you are going to make them proud. And grand tests, obviously, if you subscribe, you get the chance to take the grand test. So once you take the grand test, you know your own mistakes and you start learning everything from your own mistakes. So 1 month package is still there, very few days are left, but still you can try taking it and you can appear for the grand tests and everything and your critical analysis for the NEET PG exam. So Iconic is by far the best subscription we have. As I told you, it's a combo subscription for Unacademy and Prep Ladder. Please go for this, those who are the beginners and listening to this class. I don't only recommend it, I request you to please take Iconic. And Plus is a very basic subscription that we have. But there are benefits. You get live and recorded, you get to learn from top educators, you get all the test series, you get to study from the device of your choice, you can easily log in from any device, you get access to 25,000 plus questions with explanation, and you also get the printed notes. So it's everything is ready for you to just come and study with us. So please come and subscribe, all of those who are preparing for next 2022 batch. So I hope we can also help you prepare very nicely, and I would love to teach you pediatrics and neonatology to the best of my extent. So next orientation class I will be taking soon, where I'll teach you very basics of my subject, what you have to study, how many chapters are there, which may be standard books that you need to refer to, what should be your plan towards studying pediatrics, neonatology, social pediatrics and national programs and everything.